Good morning, dear students. I welcome you to my class in the paper of Philosophical Foundations of Education. Myself, Dr. Roli Rai. I shall be taking this class on Rousseau, continuing from the last class. Hope you are all well. Welcome to the class. We were discussing about naturalism, the philosophy of naturalism, प्रकृतिवाद और रूजो का उसमें एज अ फिलोसोफर क्या रोल है, उन्होंने कितना उसको आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट. सो what is important is the fact that how Rousseau has taken his outlook on nationalism. हालांकि उनका बैकग्राउंड ऐसा था, but still we find that his philosophy of nationalism is very much practical and required in today's world. So Rousseau talks about different aspects of education. Rousseau talks about curriculum, how education should be, and we share different views regarding philosophy based on naturalism. प्रकृतिवाद से संबंधित जो चीजें उन्होंने कही हैं, आज हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स. When we talk about philosophy as given by, you can say, the philosophers, such as different angles, when we talk about how this was brought about, you will realize it is not related just to the aspect of education. मगर उनकी जो जीवन प्रणाली थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका आधार था, वो पूरा ही डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चेंजेस को लाया जाए. नाउ ये जो चेंजेस कहे हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बताया है कि एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस करते हुए व्हाई इट हैपेंड, हाउ दैट चेंज कैन बी टॉक्ड अबाउट. सो जो फिलोसफीज उनके कही हैं, he said that people are inherently good but they become corrupted by the evils of society. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उनका कहा हुआ एक विचारधारा है, जिसमें ये है कि बेसिकली जो मनुष्य है, जो मानव है, वो अच्छे होते हैं, they are good, but they become evil only when they come in contact with society. He has continuously talked about man as good, but when coming in contact with society, man turns evil. So it is the impact of society that he says, that Rousseau talks about, which brings this negativity, brings this evil quality in human beings. He believed in liberty, equality, and fraternity. That is the reason he talks about goodness of humanity. He makes the citizens good by training and everything else will follow. Jean-Jacques Rousseau talks about कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब सेंसरी ऑर्गन्स की ट्रेनिंग होती है, तो everything else will follow, everything else will remain as same. So जो कुछ जरूरत है वो बच्चे को सेंसरी ऑर्गन्स की ट्रेनिंग की बात उन्होंने करी है. Then we talk about Rousseau's philosophy as how it brings about those changes. Naturalism was a negation of Renaissance. The naturalistic movement was revolution in the educational theory and practice, and Rousseau's philosophy was influenced by three things. ये तीन चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, जिसकी वजह से ये philosophy मानी गई है. वो तीन चीजें हैं: the state of time, extremely varied experiences of his life, and his emotional nature. जो अभी आपको ब्रीफ हिस्ट्री मैंने पिछले क्लास में बताई थी, उसकी वजह से जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव जीवन के रूजो को हुए, his theory, his philosophy was based because of that. And the state of time, जो उस दौरान जो समय था, जो काल था, जो परिस्थिति थी, जिसके कारण वो अनुभव हुए, जितने भिन्न प्रकार के अनुभव हुए, and his emotional nature that he talks about,
इनकी फिलॉसफी जो थी वो रिएक्शन था, वो एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप, द सिनेरियो एट दैट टाइम. सो इन सभी के दौरान गुजरने के कारण जो जिन चीजों के जिन माध्यम से वो गुजरे, रूजो had that tough life, had those experiences, and that is why he talked about those changes in life. When we talk about these changes, these traditions that he talks about, you will realize that he says the philosophy, his philosophy say he talks about as is generally termed. जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो उसको हम रूजो से की फिलोसफी से अलग नहीं कर पाते. जैसे हम जब नेचुरलिज्म की बात करें तो रूजो की बात ना करें ये संभव नहीं है, और जब रूजो की बात करें तो नेचुरलिज्म की बात ना करें ये भी संभव नहीं है. यानी कि ये दोनों टर्म्स, रूजो की फिलोसफी और नेचुरलिज्म, both are intertwined, interlinked, and they are always discussing about the miseries of civilization due to the departure from the nature of state of nature. This is a very important quote that he talks about when he says, everything is good as it comes from the hands of man, but it becomes evil when it enters the hands of man. जब तक वो मनुष्य के हाथ में नहीं आता, जब तक प्रकृति के अपने हाथ में होता है, तब तक सब कुछ सुंदर है, खूबसूरत है. And returning to nature, therefore, it was his method to cure the world of troubles. इनका कहना था प्रकृति अपने आप से हील कर देती है. प्रकृति ही, see, when he was very ill, physically ill, when he was mentally disturbed, he went for his treatment, and he went to he in the natural circumstances, in the natural prevalent environment, he was able to heal himself, and that is what he talked about in his total relationship. And the traditions, the traditional belief that was talked about was that the human nature was evil and must be disciplined or changed. And Rousseau said that human nature is essentially good and should be allowed to develop freely. Education, therefore, must be in harmony with original and unspoiled human nature. He told that learning takes place best when child is free to develop and grow according to his natural impulses. He was convinced that the child's original nature is good and pure, but since the child is immature and unable to care for himself, education is necessary. जैसे कि जो प्रकृति है, वो शिक्षा है, वो अपने आप में लर्निंग करती है, and original ways are learned. So प्रकृति के अनुसार जब बच्चा चलेगा, तब वो गुड रहेगा, तब वो प्योर रहेगा. द चाइल्ड विल बी एक आइडियल होगा, अच्छा होगा, उसमें प्योरिटी होगी, और वो पूरी तरीके से जब इमेच्योर या अनेबल होता है अपने आप को ध्यान रखने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, दैट इज व्हेन द एजुकेशन इज required and necessary, and each child should be provided with education. Then when we talk about his philosophy regarding naturalism, we come to the function of education is to preserve the child's goodness and cleanliness without strain, without from the world. जब हम बच्चे को अच्छा, पवित्र, स्वच्छ, साफ चाहते हैं, बिना किसी दुनियावी स्ट्रेन के, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी बुराई के, बिना किसी ईवल के, ही सेज शिक्षा बच्चे की अच्छाई को प्रिजर्व करेगी. It will be preserving the child's goodness. Then his naturalism holds that the best learning comes from dealing with natural objects. जब हम प्रकृति को डील करने की बात करते हैं, तो जब हम शब्दों की बात करते हैं नेचुरलिज्म के दौरान, तो वो शब्द हैं फ्रीडम, growth, interest, activity. All these words are well known in the field of modern progressive education. आज की शिक्षा, आज के युग में जिस आजादी की बात कर रहे हैं, जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी या वो स्वतंत्रता, वो आजादी वर्ड से ना मिलके इट इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन. आज के जो मॉडर्न युग है उसकी आगे बढ़ने की क्षमता है, वो शिक्षा को सामने लाने का प्रयास
एजुकेशन की जो हम शिक्षा की हम बात करते हैं, that is relating to different aspects, different leading to. Now, another important aspect when we talk about रूजो, जो बहुत ही अहमियत रखती है कि इन्होंने जिन चीजों की तरफदारी करी है, जिन चीजों की आगे बढ़ाने की बात करी है, वो उन्होंने अपनी किताब नॉवेल एमिली में लिखा है। और एमिली वॉज अ बुक जिसमें उनके सारे बिलीव्स सामने आए हैं। एंड रूजो रोट दिस नॉवेल टू शो हिज बिलीफ ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर आधारित करते हुए उन्होंने अपनी बिलीफ को सामने रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग। और ये 5 स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो हैं, वो हैं Book 1, which talks about infancy, goodness of men, keep children, and keeping children should be kept from forming any kind of bad habit. जो पहली किताब उनकी पहली रखी है, वो है किस प्रकार से इनफेंसी के दौरान, जब बच्चा इन्फेंट है, तो उसके अंदर जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, उसको वो कैसे अच्छा रखें, कैसे उसको अच्छाई को बुरा होने से रोक सके, बिना उन खराब आदतों को डेवलप करे, बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं. Then his second book is the relating to the age of nature, when he says that the purpose of education should be a school environment, self-motivated learning and discipline, and how the physical education can be attained. Now, ये इन्होंने कहा है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचर के साथ, प्रकृति में रहकर, विद्यालय में जो सेकंड स्टेज पर एज ऑफ नेचर है, सेल्फ मोटिवेशन है, दैट इज हाउ द चाइल्ड शुड लर्न. देन इसमें तीसरा बुक जब इन्होंने तीसरी उसकी बात करी है, दैट इज रिलेटिंग टू द प्री एडोलेसेंट इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, दैट इज जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स which are learned by desire to learn them. किस प्रकार से वो सीखते हैं. Then they come to the book that is relating to puberty, book 4, which is relating to puberty, social attitudes and natural religion. जो different aspects हैं, social attitude है, natural religion है, जो adulthood है, वो लव और है, वो इन सब चीजों को एडल्टहुड में बच्चे सीखते हैं. ये 5वीं बुक जो उनकी किताब है, प्री एडोलेसेंट, फिर प्यूबर्टी, फिर एडल्टहुड. हियर दे लर्न, यू कैन से, एन एजुकेशन फॉर वुमेन. इन्होंने वुमेन की शिक्षा को आगे प्रेरित किया है. एट टाइम्स यू डू वंडर, एंड इस पे कई लोगों ने इस बात पे प्रश्न उठाए हैं कि why did he mistreat the women in his life? But then you find that this is how many people learn by different aspects. इनकी जो किताब थी, that is related to social contract theory, ये इसमें इन्होंने सबसे अहमियत भरी चीज कही है, man is born free and everywhere he is in chain. उनका कहना था कि मनुष्य पैदा तो हुआ है फ्री, आजाद, स्वतंत्र, लेकिन तब भी वो हर जगह बंधा है, चेन से, जंजीरों से जकड़ा हुआ है. वो जंजीरें किस चीज की हैं? ना, ये जो जंजीरों की बात करी है, दैट इज एड्रेसिंग द फंडामेंटल फिलोसॉफिकल problems that he talks about. These fundamental problems that he is talking about is related to how man can be set free, how man can be free to live, and how he can succumb to the force that is related to the coercion of others. And we can do so, he says, by submitting our individual particular wills to the collective or general will, created through agreement with other free and equal persons. तो इसके तहत कहा है कि किस प्रकार से हम जीवन में चेंजेस ला सकते हैं और किस प्रकार से मनुष्य जो अपने आप को फ्री सेट कर सकता है. Then the threefold meaning of nature that he talks about related to Emile. Nature in the psychological sense. It means that original endowment inherited by man. It includes the instincts, emotions, desires, impulse, and natural tendencies. Voltaire emphasized intellect, which he talks about
see what happens, he says that these emotions, ये जो emotions हैं, बहुत सारे अंदर इच्छाएं हैं जो कुछ अचानक से करने की एक इच्छा, तीव्र इच्छा होती है, बहुत सारे व्यक्ति सोचता है कुछ करने के लिए, जो एम्फसाइज करता है उसके अंदर से इंस्टिंक्ट होता है, देयर इज अ अचानक से पर्सन फील्स इमोशंस, और इनको किस प्रकार से वो इंटेलेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेस्टिनी को मोल्ड करता है, इट इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। और हैबिट केवल एक फिक्स्ड मेथड ऑफ एक्शन है। जब आप रोटेशनल वे में किसी भी एक चीज को बार बार करते हैं तो वो हैबिट होती है। तो हैबिट कैसे फॉर्म की जाएगी, किस प्रकार से वो हित में है, किस प्रकार से सबके लिए वो बेनिफिशियल है, इसकी इन्होंने बात करी है। Nature is this is the threefold that we are phenomena we are talking about of nature in the Emile. Nature is a phenomenal sense, is the sense nature stands for the physical world. Here nature is used to indicate inanimate and subhuman nature. It includes trees, river, seas, mountains, fountains, sky. जो phenomenal nature है उसका बहुत ही ज्यादा मानने वाले थे रूसो, और प्रकृति को प्रत्येक रूप में प्रकृति की उन्होंने उपासना की है या माना है, पेड़ को, नदी को, समुद्र को, माउंटेन्स को, and he talks about different aspects when he says that nature is a social sense. Nature का social sense क्या है? He says in the early stage of human society, men and women were guided by their natural instincts and emotions. They were natural men and women. जब वो अपने प्राकृतिक रूप में थे, जब वो प्रकृति के अनुसार चलते थे, जब अपने मन के, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने इमोशंस के अनुसार, अपने व्यक्तित्व को निखारते थे, तब वो नेचुरल थे. Then they were natural men. Natural man is not the savage man, but the man governed and directed by the laws of his own nature. जब मनुष्य अपनी ही प्रकृति से गाइड होता है, जब अपनी ही प्रकृति के अनुसार जीता है, तो उसको कहा गया है कि वो सैवेज नहीं है, वो प्राकृतिक मनुष्य है, प्राकृतिक मानव है, और वो किसी अपने ही लॉज से गाइडेड है. He is guided by his own laws of nature. That is what he talks about. Then again, this threefold meaning that we are coming to is in primitive society, people entered into a contract to form a common authority in the shape of a state which would serve the best interest of the individual. A state was thus the creation of individual for their own interest and betterment. To regulate their lives, they formulated certain laws and regulations. In this way, artificial, you can say, conventions, customs, and rules entered human society. This led to the destruction and loss of the human freedom. He revolted against the very structure of the society. Everything, see, this is a statement which he has stressed upon. Everything is good in the hands of nature, but everything degenerates in the hands of man. जब तक प्रकृति के हाथ में कुछ होता है, तब तक वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो पॉजिटिव है, और जैसे ही वो मनुष्य के हाथ में आता है, वो डिजेनरेट कर जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता. So this is what he talks about when he says that this is the stage of life. Now, the types of education that he has promoted, which he has talked about, are positive education and negative education. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है? इन्होंने कहा जो कुछ शिक्षा बच्चे को देनी है वो एक स्टेज के बाद देनी है. उसको फोर्सिबली कुछ नहीं सिखाना, उसको सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से सिखाना है. बच्चा करके सीखेगा. सपोजिंग उन्होंने कहा कहीं ऊंची सी जगह है और चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर से बच्चा गिरने वाला है, छोटा बच्चा है. अगर उसके गिरने से छोटी मोटी हल्की सी चोट आ भी जाती है तो उसको गिर जाने दो. गिरकर सीखेगा तो वो याद रखेगा और वो लर्निंग उसकी प्रॉपर एजुकेशन होगी.
But when he says that this education, when he talks about, जब हम उसको एजुकेशन वो देते हैं जो उसको फोर्सिबली सिखाते हैं, तो वो एजुकेशन सही नहीं है. So he says that this education, अगर बच्चा, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो आग जल रही है और आग में गिरने वाला है, तो अगर हल्की सी मोमबत्ती से वो जलने वाला है तो कोई बात नहीं, आप उसको मॉनिटर करिए, आप उसको गाइड करिए, उसके पास रहिए, उसको सीखने दीजिए, और वो एक बार मोमबत्ती छुएगा तो समझ जाएगा. लेकिन आपके बताने से कि मोमबत्ती छुओगे तो जल जाओगे, वो उतनी लर्निंग नहीं कर सकता है. लेकिन अगर हाँ, ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ऊंची बिल्डिंग से वो गिरने वाला है तो आप उसको गिरने दें. नो, दैट इज नॉट the case that he talks about. Then Rousseau's philosophy of education is naturalistic. He is against the system of conventional and formal education. Rousseau believed that education does not mean teaching information or knowledge. It is not burden. At no point does he say that it is burden. It is the development of the child's natural powers and abilities, and Rousseau was a faithful supporter of education according to nature. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली बात है जिस पर उन्होंने कहा है कि education is much more important than we talk about. Then when we come to the general aims of education according to Rousseau, Rousseau revolts against the entire traditional concept of education. His general aim of education is given below, where education is a natural process and not artificial process. And he says that education is a development from within, not acceleration. When he says it is not accretion from without. Education should be acquired by exploiting the natural instinct and interest. It is the expansion of natural process. जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को बढ़ावा देना, उसी को आगे बढ़ाना, उसी की लाइफ को स्टेट करना. Attainment of fullest natural growth of individual is what he talks about as general aim of education. So we realize that education could be acquired by exploiting the natural instinct and the interest. It is the expansion that he talks about. It is of natural process. It is a development from within. It does not talk about education just from superficial level. Then when we talk about education relating to the methods of education system, you will find Rousseau had deep sympathy for children and advocated simple and direct method of instructing them. Again, the question arises at many a times, many philosophers question कि ऐसा क्यों था कि रूसो ने खुद अपने बच्चों को ऑर्फनेज में डाला और इतना चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करी. Because he himself has suffered a lot. Rousseau had deep sympathy for children and advocated simple and direct methods of instructing them. He laid special emphasis on object teaching. उनका कहना था ये ऑब्जेक्ट को दिखाकर सिखाओ, बच्चों को सेंस करने दो. Let the sense always be the guide. Let there be no textbook. पेन दिखाकर बताइए, ये मत बताइए पेन ऐसा होता है, पेन कैसे करते. No, but there should be no textbooks, but the world and no other instructions than facts. The children who read does not think he is merely reading. He is not receiving instruction but learning words. He also told that only the textbook was the great natural book of nature. जिस किताब पर उन्होंने बहुत रॉबिन्सन क्रूसो was the name of the book which he laid emphasis on, जिस पे उन्होंने importance दी. Rousseau's objected to the verbalism in education, and words according to Rousseau were being memorized but not understood. Child, he said, believe he should be taught by experience and not by verbalism. जब हम उसको verbally कुछ सिखाते हैं तो वो नहीं सीखता, मगर अगर किसी अनुभव के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चे जरूर सीखते हैं. That is why he has advocated the playway method. Now when we talk about the methods of teaching, we need to understand he talks about avoidance of books, he talks about the child-centric education, he talks about the method of teaching, the heuristic attitude, and also he said it is against rote memory.
ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट रोट मेमोरी, जो जैसे आइडलिज्म की फिलोसफी कहती थी कि मेमोराइजेशन, लर्निंग, मगिंग अप, तो ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट. ही सेड कि अगर कोई चीज की लर्निंग करनी है तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड, अगर वो किताबों को हम अवॉइड करें, मगिंग अप, रोट लर्निंग अवॉइड करें, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को सदा इंपॉर्टेंस दी है. दैट इज व्हाट he talks about. Then we come to stages of education as shown by Rousseau in Emile. एमिली की किताब में जो बुक है, एजुकेशन में फॉर इन्फेंसी 1 to 5 years का पीरियड रखा है. जैसा कि आपको भी बताया था, फॉर दिस पीरियड रूजो एडवोकेट्स फिजिकल एजुकेशन. बच्चे को केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से सीखने का मौका देना चाहिए. ही सेड दैट ऑल द विकेडनेस कम्स फ्रॉम वीकनेस. केवल वीकनेस जो है वो वीकनेस से ही क्रुएल्टी आती है, कनिंगनेस आती है, और चाइल्ड बिकम्स बैड इफ ही इज वीक. मेक हिम स्ट्रॉन्ग. अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग, देखिए आपने उसकी पुरानी उनकी जीवनी के बारे में जब आपको बताया, जब प्राइमरी स्टेजेस बताए, ही वाज वेरी वीक. Rousseau was physically unfit, so he decided to become strong, and that is what he says: make a child very strong. The child should be made strong so that he will always keep a restraint upon himself and will not be led into evil ways. This is the period of physical education, of memory, of the education should be free and unrestricted education with expression of the natural activities of the child in his natural environment. Then we come to the stage when he talks about 5 to 12 years. इनका कहना था कि इस पीरियड में क्रिटिकल पीरियड है ह्यूमन लाइफ का, जहाँ इन्फेंट बड़ा होता है, डिफरेंट नीड्स होती हैं, and the child's mind is dominated by the senses. और इस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि जो प्रॉपर पावर ऑफ रीजनिंग है वो डेवलप हो सके, और राइट और रॉन्ग के बीच में वो नहीं समझ सकता, तो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है. लेकिन मॉरल ट्रेनिंग देने की जरूरत एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको देनी चाहिए. So necessity must be his teacher, let him learn by experience and results of his own conduct. So next stage he talks about is the stage of boyhood. इसमें उन्होंने कहा है कि 12 से 15 वर्ष की आयु में वो बॉयहुड का पीरियड है, जिसमें प्री एडोलेसेंट एज की बात करी है. और ये जो बालक एमिली है उसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे जैसे एमिली बड़ा हो रहा है तो उसको क्या करना है. Then he says this is a pre-adolescent stage and the period of intellectual education, जहाँ पे acquisition of knowledge होगी. Or the boy is now, and he says the boy is now adult and he should be able to follow in this period the curiosity. And Rousseau in his book also introduces the studies that reveal nature, astronomy, geography, science, and the art and craft. He should deal with these problems on his own resources, independent of the authority or advice of other people. He should learn by his own efforts through the observation of nature. Then he says that this education from manhood, जिस फाइनल स्टेज में 15 से 20 वर्ष की जो आयु है, इसमें बच्चों को मॉरल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मगर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मॉरल एजुकेशन में भी दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. Place the proper environment and the human would learn things through direct experience. He says direct experience के माध्यम से बच्चे सीखेंगे. And this stage of adolescence undergoes a new birth on account of the appearance of sex desire. जो physical need है, जो physical desire है, वो इस एज में 15 से 20 वर्ष की आयु में बच्चे फील करेंगे, और उस बालक को adolescent has to learn at this stage the control of passion. अपने पैशन को कंट्रोल करना, फिजिकल नीड्स, फिजिकल डिजायर को कंट्रोल करना. एंड इन दिस स्टेज ही सेज द मैन शुड लर्न हैव मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन. Then this belief regarding women, he says, women education, he says, Rousseau in his book talks about Sophie, and Sophie is the girl he says Emile is going to marry. And फिर इसमें उन्होंने सोफी को जो चीजें डायरेक्ट करी हैं वो एमिली बुक में वो वुमेन एजुकेशन के पर्टेनिंग है.
Rousseau in his book talks about how men and women are not and ought not to be constituted alike in character and temperament. This is again where many philosophers are against the views given by Rousseau, because he is talking pro men instead of pro women. Women should be taught, he says, sewing, embroidery, and lace work, and they should be taught singing, dancing, and accomplishment. Ethics and religion must be taught, but no philosophy, science, or arts. Girls should be taught to be obedient, industrious, in respect of women education. And he says the Rousseau appears to be conservative and traditional in this regard. He does not show a progressive outlook. This is very sad, but this is the way he talks about, because that was a time of conservatism, traditionality, and this is what Rousseau says, that women should be given restricted education. Regarding education, the views of Rousseau was the child is a child and not a small adult. बच्चे को एक adult ना मान के बच्चा मानना चाहिए. Child should learn from nature and the child should not be forced to do things. बच्चे को force मत करें. बच्चों को अपने समय के अनुसार धीरे धीरे सीखने दें. टीचर्स आर आवर फीट, हैंड्स एंड आईज, और इन्हीं टीचर्स के माध्यम से बच्चे फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, सीखेंगे. And children should never receive punishment. They should learn the natural consequences of their faults. The child should be self-reliant, is what they talk about. जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको बताया, वो इसको मैं फिर से रिफर्बिश करा रही हूँ आपका. इन्फेंसी जो बर्थ से लेके 5 इयर्स तक है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी है. चाइल्डहुड जो कि 5 से 12 वर्ष की आयु का है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स की बात करी है. उसके बाद में बॉयहुड जो कि 12 से 15 वर्ष की आयु, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करी है. और एडोलेसेंस जो कि 15 से 20 वर्ष की आयु में है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन की बात करी है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट डिफरेंट चीजें जिसमें बताई गई हैं कि इनफैंसी में क्या करना है, चाइल्डहुड में, बॉयहुड में, एडोलेसेंस में. सो इनफैंसी ही सेज नो करिकुलम, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट. दिस इज क्लियर. छोटे बच्चों को सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी है. फिर चाइल्डहुड में लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड ओन एक्शंस, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखें. और जब बॉयहुड की बात आती है तो उन्होंने कहा कि टू लर्न लैंग्वेज, मैथ्स, फिजिकल साइंस, ड्राइंग, कारपेंट्री एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनको सीखने की बात करी है. उसके बाद में जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, they have talked about religious, moral activities, occupation, sex education, aesthetics, history, and physical education is what they talk about. Then we come to Rousseau's view on curriculum. During infancy, Emily will not be taught, he says, the usual subjects. Why? Because those subjects do not fulfill the needs of childhood. Children are not capable of learning things which the adults can learn. Their way of seeing things, their way of thinking and feeling are different from those of adults. इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस स्टेज पर जो एजुकेशन एमिली को मिलेगी, that will be purely negative. It is the period for physical development. His senses are properly exercised and for cultivating natural habits. Then he says in the next stage, Emily's education should be purely negative. There will be no verbal lessons. His learning by own experiences, and no books should be used. There is no place, he says, of moral instruction at this stage, as it requires the exercise of reasoning. And childhood is the sleep of reason. Education, according to him, is the stage which includes mainly training of the senses, but no intellectual training should be provided at this stage, he says, and some amount of moral training can be given by means of example. तो ये इन्होंने इस चीज के बारे में कहा है.
Then regarding Rousseau's view on curriculum, we find he says, with his bodily organs and senses trained, Emily is now prepared to receive knowledge in the pre-adolescent period. It is a period of intellectual education. Accordingly, he will be taught physical science, language, mathematics, manual work, trade and social relations, music and drawing. He also says that curiosity or interest is the sole guide in this period of education. The curriculum, therefore, at this stage should be built around curiosity and useful activities. No book knowledge will be given even at this stage. The child will learn by his own effort and through contact with nature. बच्चा प्रकृति में के संपर्क में आएगा, उसी के माध्यम से सीखेगा. कोई भी चीज इस स्टेज पे भी उसको नहीं फोर्सibly सिखाई जाएगी. And the book, like I told you, the only book that Rousseau recommends for Emily at this stage is Robinson Crusoe, the study of life according to nature, as he says. Manual and industrial art should also be, he says, included in the curriculum. ये इनके अनुसार शिक्षा इस तरह से हो कि वो include करी जा सके. Then when we try to talk about the Rousseau's view on curriculum, with the beginning of the adolescent period begins the moral and religious education of Emily, and the moral qualities such as benevolence, kindness, service, sympathy should be developed now. इनका कहना है कि जो moral और religious डेवलपमेंट है, शिक्षा है एमिली की, वो इस स्टेज पे दी जानी चाहिए. और जो मॉरल एजुकेशन है वो रूजो के अनुसार इट शुड बी गिवन थ्रू एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस एंड नॉट थ्रू लेक्चर्स ऑन मोरालिटी. Besides moral education, the curriculum at this stage should be include the history and religious instruction. और जब हम religious instruction की बात करते हैं तो जो aesthetic physical culture है, जो sex instructions हैं, all those are also included. The education of Emily has now to be positive and not negative. अब बच्चों को ये सिखाने की जरूरत आ जाती है कि क्या चीजें उनको नहीं करनी है. तो शुरुआती दौर में नेगेटिव एजुकेशन देनी है, ना कि पॉजिटिव. Now the youth, he says, is to be educated for life with others and is to be educated in social relationships. Now the training of heart should be received and it should receive attention because of the appearance of sex impulse. The adolescent at the stage has to learn to control passion. इनका कहना है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे को फिजिकल नीड्स को, फिजिकल पैशन को कंट्रोल करना आना इस समय इम्पोर्टेंट है. सो द चाइल्ड शुड लर्न how to control the passion and the sex impulse, as he puts it. Then there is certain criticism, as I told you in between also, that the Rousseau's ideas are full of contradictions and inconsistencies. And Rousseau himself said, I should rather be a man of paradox than prejudice. The education advocated by Rousseau was anti-social at times, it has been said. The society is subordinated in the individual who is supreme, and the social environment is neglected, and the Rousseau's view of democracy is wrong in the present world as we find it. And he strongly opposed women's education, which is not at all tolerable. And a woman of culture is to be avoided like a pestilence. Now we find कि ये जो शिक्षा रूसो ने दी है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. इसका कई जगह क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि स्वयं उनका बचपन बुरा बीता, इसलिए उन्होंने जो शिक्षा बच्चों को देने की बात कही है उसमें कई जगह कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज पाए गए, कई जगह पैराडॉक्स देखा गया. और उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि उनमें he would prefer to be full of paradox rather than prejudices. और सोशल एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट किया है. कई जगह वुमेन एजुकेशन के बारे में उन्होंने, when he talked about in his book Emily, and he talks about the girl Emily is going to marry, Sophie, he is continuously telling how he would like to train how that women should get education. They are just supposed to please the men and fulfill the desires, fulfill the requirement of an ideal wife. They should know how to sew, how to cook, and how to keep men happy.
So these are the various aspects we find the drawbacks of Rousseau's educational system of education. Then we find various books which have been written by Rousseau. His essay on discourse on the art and sciences has won a literary prize from Academy of Dijon in 1749, and this gave him literary fame, and he returned to Geneva in 1754. There he rejoined the Protestant church and regained his citizenship. He published several essays and had some different mistresses in the next few years, which is again a sad references. As I would like to refer back to the point of the criticism that has been talked about Rousseau, we must realize the different aspects that why it was so. The points to be noted remains that naturalistic philosophy is indeed a wonderful philosophy as long as we remember the drawbacks it can provide. So children should be provided education according to Rousseau in a naturalistic environment amongst nature without any punishment, without any rote learning and memorization, yet giving the best. They should they should be promoted to develop in themselves the sensory organs. उनको किस प्रकार से अपने sensory organs को train करना है, किस प्रकार से अपने आप को इस तरह से training देनी है कि वो शिक्षा प्राकृतिक रूप से हो. उनको पनिशमेंट नहीं देना, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देना, क्योंकि प्रकृति स्वयं इसका ध्यान रखती है. So these are the various aspects that he has talked about, and I'm sure you must have followed the advantages as well as disadvantages of Rousseau's philosophy of education. So students, I really hope that you have followed and understood the various aspects that we covered on Rousseau and how well it is related to naturalism. So wishing you all to see you all in the next class, hoping you have followed, and in case you have any questions, any queries, you may please ask me on the next count, post me the questions. With that, I wish to now end my class. Thank you all. Thank you, dear students. I wish to see you in the next class. Okay. Thank you.